The new poem we are going to start today is A Roadside Stand. Roadside Stand, अगर आपको याद हो, 9th standard में you had a very beautiful poem called as Road Not Taken. That was about the choices we make in our life. And this poem is written by Robert Frost. ये जो पोएम है थोड़ा सा अलग है. Let me tell you, in the very beginning, class 12, this poem is bit different from all the poems you have studied. You will be definitely having difficulties in inferring the answers of this poem because the poem is written in 6 paragraphs. It's like 6 paragraphs, and it's a long poem means. Moreover, every word, every letter, every sentence has a meaning. First of all, let us go for the summary of the poem. On the overall, the poem is about the difference between the rich and the poor. According to Robert Frost, उनका मानना है कि जो rich हैं, they are insensitive towards the poor. वो लोग जो है insensitive हैं. They don't bother about the poor people's thoughts, about their feelings. उनका मानना है कि to remove this difference between rich and poor, we need to be sensitive. The people need to be sensitized. The poem is not written from the point of view of a common person, but it is written from the point of view of a poor person. ये याद रखना आप लोग. The poem is not written from my point of view. The poem is written from a poor person's point of view कि वो क्या समझता है. The poem is about, अगर आप लोग भी कहीं घूमने जाते हो, out of Delhi, I'm not talking about within Delhi, outskirts of your place, अपने घर, अपने शहर से जब हम बाहर जाते हैं तो शहर में तो भीड़ भाड़ होती है, बट वंस वी एंटर इनटू द रूरल साइड, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से जो है दुकान होते हैं, बिल्कुल छोटे, नॉट द वन बिगर वन, छोटे छोटे से. घर के बाहर जो है दे माइट हैव टर्न द हाउस इनटू अ स्मॉल शेड इन द रूरल एरियाज, जहां पर वो सिर्फ वो चीजें जो उनके आसपास में अवेलेबल है. इट्स नॉट अ प्रॉपर शॉप, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग कि वो लोग मार्केट से लेकर आ रहे हैं और उसे बेच रहे हैं. जो उनको आसपास में है, लाइक इफ दे आर ग्रोइंग सम वेजिटेबल्स और सम फ्रूट्स, उसी को वो लोग बेचते हैं. नाउ देयर पर्पस इज कि जो वहां से गाड़ियां गुजरती हैं तो दे नीड सम रेस्ट, दे नीड सम फ्रूट्स, दे नीड सम स्क्वैशेस, तो वो उन दुकानों में आए और उन चीजों को खरीदें. उनका पर्पस वही है. बट अकॉर्डिंग टू द पोएट, ही सेज कि ये जो गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग, वो लोग उनको जो है उनका मजाक उड़ाते हैं. समटाइम्स वहां पे जो नॉर्थ एंड साउथ के जो सिंबल्स लिखे होते हैं वो उल्टे सीधे होते हैं. उनको देखकर कार में जो जा रहे हैं उन्हें गुस्सा आता है ऑन द स्पेलिंग्स, ऑन द सिंबल्स, और उनको लगता है कि इतने खूबसूरत जगहों को ऐसे छोटे छोटे शॉप्स की वजह से जो है द ब्यूटी हैज बीन स्पॉइल्ड. Moreover, he is also angry on the government, on the authorities. उनका मानना है कि जो गवर्नमेंट है दैट मेक्स फेक प्रोमिसेस, वो झूठे प्रोमिसेस करता है, दैट दे वुड बी प्रोवाइडिंग देम विथ ऑल द फैसिलिटीज, लेकिन नहीं करते. Many of the time these poor people are exploited. Their
efforts are harassed, they are made to work, they are deprived of food and sleep. फिर वो कहता है कि समटाइम्स अ कार डू स्टॉप, गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन क्यों खड़ी होती है? नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू बाय समथिंग फ्रॉम दैट शॉप, कभी कभी तो वो मजाक उड़ाते हुए वो चीज मांगते हैं जो उन्हें भी पता है कि ऐसे शॉप्स में अवेलेबल नहीं हो सकता. एंड समटाइम्स दे वुड बी रिवर्सिंग देयर व्हीकल, अपनी गाड़ी को बैक करते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि पीछे कोई सामान रखा हुआ है, उसको तोड़ते हुए चले जाते हैं. एंड समटाइम्स दे मे बी आस्किंग फॉर सम डायरेक्शन. अब ये तो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं कि चलो हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो उधर से जब हम जा रहे हैं तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि भाई बता दो जगह क्या है. लेकिन लुक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक ब्रेक जब लगती है, एट ईच स्क्वील ऑफ ब्रेक, वो लोग क्या सोचते हैं? ओ, गाड़ी रुकी है, दे माइट बी बाइंग समथिंग. उनके अंदर एक होप आता है कि शायद ये गाड़ी से उतर के जो कोई इंसान है, ही इज गोइंग टू बाय समथिंग. लेकिन we, the people who are inside the cars, we do not bother, we are insensitive. And he concludes this poem that unless and until he wants, क्या वो चाहता है? कि वो चाहता है कि ये जो लोग हैं, इनकी जो पेन है, that should be reduced. He knows that वो कुछ भी करेगा, that is futile, but from his heart what he wants is कि the pain of such people should be removed. There should be something जिससे कि इन लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए. He wants that people should become sensitive. The government should also take proper care. And जो ये छोटे, मतलब कि these poor people, poor farmers who just want a second income, an extra income, do not want anything else. So this is the poem, summary of the poem, A Roadside Stand. I'm doing the poem along with NCERT. Kindly look on the screen if you have the books. Kindly note down the extra things. And also, I would request when I'm discussing there are only four poetic devices in this. One is personification, oxymoron, alliteration, and transferred epithet. So you can go through those four poems, then the rhyming scheme and the poet's name. After 3 or 4 years, this poem has been added in your syllabus. So for the past 2 or 3 years, you may not find the question answers of this particular poem. But if you want to look, इससे पहले वाले जो years हैं, उनमें आपको मिलेंगे. And 2010 से लेके 14 के बीच में जो है, you may be getting all the question answers. Otherwise, in the new edition, all the question answers are going to be there. The RTCs, everything, right? So let us start the poem. A Roadside Stand. As I have already mentioned that the poem is written by Robert Frost, and you all had one poem in your class 9 which was A Road Not Taken, written by the same poet. Before you read,
as it is written, and I have already told you that you might be now having more or less the competency based questions where you might be asked to. So, have you ever stopped at a roadside stand? What have you observed? This is very quite common. In fact, uh, many a times I feel this thing. It's not because this poem is there. ये poem तो अब add हुआ है. But many times I feel that we should not stop unnecessarily in front of the small vendors. Not in the countryside, even in the shops also. कभी कभी हम लोग उनसे पूछते हैं भैया इस ये जगह बता दो, ये दुकान बता दो. बट हमने तो ठीक है, हमें तो ये क्यूरियोसिटी होती है कि दीज पीपल नो द लोकल एरिया, तो हम उनसे पूछ रहे हैं. बट व्हेन वी स्टॉप, वी आर एक्चुअली नॉट स्टॉपिंग, वी आर गिविंग देम द होप कि शायद नीचे उतरने वाला जो है वो हमसे कुछ खरीदने वाला है. इन अनदर वर्ड्स, वी आर गिविंग अ फॉल्स होप टू दीज पीपल, विच एक्चुअली उन लोगों को जो है दुखी कर देता है. द लिटिल ओल्ड हाउस, यहाँ पर जो लिटिल ओल्ड हाउस है, इट मे बी ऑफ अ फार्मर, इट मे बी ऑफ अ फार्मर्स होम, वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, मतलब उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है. इफ यू लुक इन टू दिस ऐसे करके, तो आगे जो है एक्सटेंड करके दे हैव मेड अ स्मॉल शॉप इन फ्रंट at the edge of the road where the traffic sped. मतलब the house has been extended to make a small shop, and where this particular shop has been extended, it is near those areas, the highways you can say, where normally the city people cross. A roadside stand that too pathetically pled. यहाँ पर too pathetically pled is both personification and alliteration, because a roadside stand cannot plead. Plead का मतलब होता है request. Plead का मतलब होता है request. It is the past tense of plead. It's the past tense of plead. तो a roadside stand that too pathetically pled means it is the people, the farmers, the shopkeepers are pleading you, requesting you to buy some commodity from them. उनसे कोई चीज आप खरीदो. It would not be fair to say for a dole of bread. Dole of bread का मतलब होता है just to fulfill their stomach. Dole of bread means food. It is not that कि उनको उससे survive करना है. No, no, no. But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. मतलब यहाँ पर उनका कहना है कि it is not for fulfilling their basic needs, but for some extra money that they want from those people, those who are moving in that car. The flower of cities, मतलब कि flower of cities here is for the people who are in the car. जो लोग कार में हैं, ये उनके लिए है. From sinking and withering. Sinking का मतलब होता है डूबना, withering मतलब फेड हो जाना, मतलब उनको थोड़ा सा बचाएं. To save them. To save them. The polished traffic. The people, the cars. The polished here is for the sophisticated, the rich people. Passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong. Normally ये जो लोग हैं, the polished traffic means the people who are in the cars, normally they don't think with a mind ahead, मतलब thoughtless. They are thoughtless. वो लोग इन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं. And even, और अगर सोचते भी हैं, even ever aside a moment, मतलब even अगर वो कभी कुछ बोलते भी हैं, तो क्या बोलते हैं? Instead of encouraging, they criticize. They criticize that
The landscape has been spoiled. Marred मतलब spoiled, उसको खराब कर दिया है with the artless paint. देखो कैसे गंदा सा एक दुकान लगा दिया है, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो ब्यूटी है वो खराब हो गया है. या of signs that with N is here for north and S is here for south. These have come in the boards when this particular poem was there. This has come in the boards. What is N and S? What do N and S stand for? N stands for north and S stands for south. मतलब कि north को इधर जाना और south को इधर जाना वो उल्टा लगा हुआ है. So even if they are speaking anything, they would be criticizing that these shops are actually artless. And in fact वहां पे जो साइन लगा हुआ है they are all. अब आप लोग सोच सकते हो कि these people जो कि ये लोग हैं, these people are not educated, so how will they know about north or south? Or crook neck golden, sorry, offered for sale. यहाँ से again they are telling about the things that are sold in that shop. उस शॉप के अंदर क्या क्या सेल आउट होता है. या तो वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स. वुडन का मतलब लकड़ी का, क्वार्ट इज क्वार्टर ऑफ अ गैलन, छोटे मतलब थोड़ा थोड़ा सा, इन लेस क्वांटिटी. मतलब वो लोग जो है दे डोंट कीप बल्क थिंग्स, दे कीप थिंग्स इन लेस क्वांटिटी. और क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉट्स. और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सी. वो लोग जो है छोटी छोटी चीजें, एज आई टोल्ड यू, दोज थिंग्स विच आर व्हाट यू कॉल एज अवेलेबल एट देयर एंड, वो उसी चीज को वो लोग बेचते हैं. बट दे आर नॉट अबाउट द ब्यूटी. ब्यूटी तो आपका ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में है. They are not here to beautify the things, but they are here to sell out those little things. आप उनसे शिकायतें कर रहे हो. आप उनसे क्यों शिकायत कर रहे हो? उनका कहना है कि आप उनसे क्यों शिकायत कर रहे हो. They are not selling the things which are available. They are selling things which are available at their own ends. You have the money. यहाँ पर जो है the poet is angry. आपके पेपर में क्वेश्चन आया था कि ये जो वर्ड है why it has been put in the brackets, why this crossly has been put in parenthesis, because the poet is angry. वो अपने गुस्से को दिखाना चाहता है. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? ठीक है, अगर आप इनसेंसिटिव हो, इफ यू आर सेल्फिश, तो ठीक है, तुम्हें अपने पैसा अपने पास रखना है ना, तो बस जाओ, पैसा अपने पॉकेट में रखो और जाओ. द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है व्हाट द सीनरी हैज बीन. व्हाई यू आर बॉदर्ड. मतलब यहाँ पर जो है इन दीज 3 लाइन्स द पोएट इज गेटिंग एंग्री कि भाई अगर तुम्हें नई चीजें खरीदनी है, अपने पैसे को अपने पास रखना, तो अपने पास रखो ना, फालतू की चीजें क्यों बोल रहे हो. मीन्स ही इज गेटिंग एंग्री. दिस हैज कम इन द पेपर. सो much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise that the party in power said to be keeping from us. The person, the farmer, the one who has put this shop, जिसकी ये दुकान है, वो कह रहा है कि भाई हमारे पास so much as the trusting sorrow of what is unsaid, मतलब there are so many things which have been unsaid. हमने जो है दुनिया से दूर, सिटी से दूर, ये छोटा सा जो शॉप
रखा है, दिस इज ओनली सो दैट हमारे पास भी कुछ पैसा आए. सम सिटी मनी मीन्स द पीपल हु कम फ्रॉम द सिटी, the people who come from the city, to try if it will not make our being expand. मतलब अपने जो ज़रूरतें हैं उसको हम थोड़ा सा कैन वी मैनेज एंड गिव अस अ लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स. मतलब जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि लोग आते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो द मतलब कि द स्टेटस ऑफ दीज पीपल ऑल्सो इम्प्रूव, तो ऐसा कुछ हो. That the party in power is said to be keeping from us. Party in power मतलब the people who are authority, the government, जो झूठे promises करती है, those people who give false promise. It is in the news that all those pitiful kin are to be bought up and mercifully gathered to live in villages next to the theatres and the stores, where they won't have to think for themselves anymore. मतलब बोला जा रहा है, it is in the news, मतलब it is being said कि ये जो दुखी लोग हैं, pitiful kin मतलब all these people, इनको लेकर आएंगे and they would be given, they would be मतलब कि the government is ensuring कि उनको थिएटर्स के पास या फिर ऐसी जगह जहां पर भीड़ भाड़ आती है वहां पर दे वुड बी गिवन सम एम्प्लॉयमेंट, जहां पर दीज पीपल, दे मतलब द पीपल हु आर पुअर won't have to think for themselves anymore. मतलब ऐसे झूठे promises किए जा रहे हैं कि अभी आपको हम लोग relocate कर देंगे, you all will be relocated near prominent places where you would be and you will be earning good amount of money, while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits. ये वाला जो this line है, this is very important. But while मतलब but ये जो greedy good doers जो हैं, this is oxymoron. ग्रीडी और गुड दोनों साथ में आ गए, बेनिफिशेंट एंड बीस्ट दोनों साथ में आ गए. दिस इज ऑक्सीमोरन, टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर. कहते हैं बट ये जो है, जो खुद को भगवान मानते हैं, दोज हु थिंक दे आर डूइंग गुड, दोज बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे मतलब दोज हु आर एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, दोज हु आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स, वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों को harass करके, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their, उनके ब्रेन को वॉश करके उनका फायदा उठाते हैं. they take advantage of them by making false promise, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. The ancient way here has been written कि जैसे normally क्या होता है, हम दिन में काम करते हैं and रात को सोते हैं. Ancient means normally in the olden times people worked in the during the day and they rest in the at night. बट ये जो लोग हैं, दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दीज पुअर पीपल, उनको कहते हैं हाउ टू स्लीप. हम आपको बताएंगे कैसे आपको सोना है, कैसे आप पैसे कमाने वाले हो, हाउ यू आर गोइंग टू बिकम रिच. ऐसा कहकर उनसे काम करवाते हैं एंड खुद जो है आराम करते हैं. समटाइम्स आई फील I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. This has also come in the paper. What is a childish longing? Sometimes means कभी कभी. वो कहता है कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ. I can hardly bear मतलब I am not able to tolerate.
when I look at the plight of these people, जब मैं इन लोगों के condition को देखता हूँ, तो I'm not able to tolerate. I'm very much hurt. क्यों? Because उनकी आंखों में childish longing, एक बच्चे वाला longing होता है. अगर आपने किसी बच्चे को देखा हो, if you have seen any infant or any small kid, तो द चाइल्ड इज ऑलवेज लॉन्गिंग कि उसकी ममा या उसके फादर उसको भी कोई चीज देने वाले हैं. व्हेन दे गो आउट, तो वो वेट करते हैं कि द पेरेंट्स वुड कम. देयर इज बचपन में जो इनोसेंस होता है, चाइल्डिश मतलब इनोसेंस, एंड लॉन्गिंग मतलब वेटिंग फॉर समथिंग. बट ऑल दीज वे जो वेटिंग है, दैट गोज इन वेन, दैट बिकम्स फ्यूटाइल. उनके इस उम्मीद का, उनके इस होप का, there is nothing to do with the people. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. मतलब वो लोग अपने दुकान पर अपने छोटे से विंडो के पास बैठे होते हैं, एंड शायद पूरा दिन उनका निकल जाता है इन प्रेयर्स कि यार कोई तो आ जाए, काश someone comes, someone buys something. मतलब all the day long, these people, these poor people, those who have the roadside stand, they pray that someone should come and buy the things from them, but it goes in vain. For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, यहाँ पर it's a transferred epithet, selfish car, just one to inquire what a farmer's prices are. One did stop, but only to plow up a grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way where it was bound. वो कहते हैं ये लोग हर एक स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, मतलब हर एक बार जब ब्रेक लगती है या फिर हर बार जब कोई गाड़ी वहां रुकती है, तो बहुत उम्मीद से, with lots of hopes, they look at. But those people who are in those cars, they are all selfish. They don't come here to buy anything. वो लोग कोई चीज यहाँ लेने नहीं आते हैं. कोई आता है just to inquire the prices, मतलब grains के prices, farmers prices मतलब the grains. And one did stop, एक रुका, but उसने क्या किया? When he reversed the vehicle to plow up grass and using the yard to back it, वहां पर बड़ा सा यार्ड था, तो गाड़ी को पीछे करते हुए वहां जो पीछे घास रखा था उसको भी कुचल के चला गया. And another to ask the way where it was, और कोई और आता है तो वो रास्ता पूछता है. Nobody buys the things that are available over there. The people who come over there, they only come for their own selfish demand. They come for their own way. They don't come for these people. And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They could not. They had none. Didn't it see? Again, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी the word has been put in crossly, and again it has been put in crossly. This is again anger. This has been put in crossly in the parenthesis to show the anger of the poet. कहते कोई और आता है, वो उसे पूछता है गैस यहाँ पे मिलेगा, उनको दिख नहीं रहा है. They could not, they had none. Didn't it see, मतलब उनको दिख नहीं रहा है कि this is a small shop. How can they have those things which are beyond their limits? No. In country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. जहां पर पैसा, प्रॉफिट देखा जाता है, वहां पर जो स्पिरिट है, the spirit of helping others, the spirit of being
good to others, ये नहीं है. People are too selfish. Or so the voice of the country seems to complain. I cannot help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. वो कहता है कि आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ. कहता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आई वुड बी रिलीव्ड if I could remove the pains of these people in one single stroke. एक झटके से अगर मैं इन लोगों की तकलीफ दूर कर दूं तो I would be happy. And then next day, as I come back into the sane मतलब conscious, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. और शायद आप लोग आओ, you may help me out. In the last paragraph, he wants to say that unless and until people are not sensitized, people do not look at others with a sympathy, they start understanding their problems, तब तक ये जो लोग हैं इनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग कभी सॉल्व नहीं कर सकते. The people may be right, they are moving from one place to another, so उनको रास्ता पूछना है, उनको सामान पूछना है, but on the other hand, these people, those who are living in this area, those who are living in these small shed, जिनका घर एक छोटा सा शेड है, उसी को उन्होंने आगे बना रखा है. इट इज नॉट अ बिग शॉप. दे आर नॉट ट्रेडर्स, दे आर नॉट बिजनेसमैन. उनके पास जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हीं को उन्होंने अलग अलग कलर बना के उन्होंने जो है उसको जो है दे आर ट्राइंग टू सेल आउट. If we are not able to buy the things, at least we should not make fun. We should not give them false hopes by asking them about these things, about the direction, about by reversing the car. उसका कहना कि अगर हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम उनको हमें जो है तकलीफ भी नहीं देना चाहिए. As I said in the very beginning that the poem is completely written from the point of view of a, what we say, a roadside. It is not written from our point of view. ये हमारे point of view से नहीं लिखा हुआ है. See, if I look at my own point of view, तो होता ही है कि when we are, when we are moving from one place to another, it happens कि certain times we need to ask the way. Certain times we need to go from one place to another, तो पीछे गाड़ी करते हैं. But what he wants is कि एक a nation can develop only when there is a fair advancement. The difference between the towns and the rural areas is reduced, and the struggles of these unprivileged people, उनको जो कि बिल्कुल contrast है from what we say, the people who are living in the city, those who are traveling in the car, those whom he call as rich, उनसे इनकी जो दुनिया है that is completely different. So it is about, you can say, it is revolving around the heartbreaking truth. ये भी एक सच्चाई है that there is always a difference between the cities, urban or even rural में भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, but most of the time ये जो traffic जो pass हो रहा होता है वो ignore करता है. They may not be in fact finding it suitable. Now if you ask me कि मैम आप जाकर खरीदोगे तो definitely no. If it is of my use, I will definitely, we can buy a bottle of water, but what about the squashes or what's? No, I don't want those fruits. मुझे नहीं खाना वो. But this poem is written from the point of view of a poor person first. Second thing is, he is emphasizing on the truth that we need to bridge the gap between the rich and the poor. It's not written from the point of view of a rich, but it is written in the point of view कि मैसेज जो है वो ये है कि एक नेशन, जब हम जिस एक नेशन का डेवलपमेंट बोलते हैं तो देयर आर फेक प्रोमिसेस.
which is done by the government, by the people who are in power, the people who are contesting elections. They often make the promises कि yes, आपका जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगा, यहाँ पे रोड्स आ जाएंगी, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर बड़ा सा मॉल बनेगा, तो वहाँ पर आपको जो है यू विल बी गिवन दी वर्क. But on the other hand, most of the time these people are harassed. So let me conclude the poem once again. As I said, the poem is long. The very first paragraph is about how the roadside stand has been made. मतलब ये कोई दुकान नहीं है, it is only the home of a farmer जिसने अपना छोटा सा जो घर है उसके आगे एक शेड बना दिया है, एंड उसने स्पेसिफिकली जहां से ट्रैफिक जाता वहां पर he has made it so that the people who are moving may buy something. That's an indirect plead मतलब request, जिससे कि उनको थोड़ा सा पैसा मिले, उनको भी जो है they are also feeling the worth of money. But most of the time the people who are passing over, either they would be ignoring these areas, और अगर इग्नोर नहीं भी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे माइट बी कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स पुट इन अ रॉन्ग वे, या फिर द स्पॉइलिंग ऑफ द नेचुरल ब्यूटी. सो द person, the poet, everyone is angry. If you don't want to buy, at least don't criticize. They have made this just to survive. They have been given all the fake promises by the party in power, by the authorities. They have been told that they would be relocated, but instead of giving them any benefits, they are in fact exploited. Then the poet says that he is having an intolerable pain when he looks at the eyes of these people, those who are having the childish, innocent longing in their eyes. कब होता है उनकी आंखों में ऐसा? When the vehicles come over, कभी ब्रेक लगता है, कभी गाड़ी रुकती है, लेकिन लोग वहां पर सामान लेने के लिए नहीं रुकते हैं. Instead they either come to ask for some price, sometimes they might be reversing the vehicle, sometimes they may be asking something which is not available, or sometimes just to ask the directions. So he says that if we want the development of the country, then we need to bridge the gap between these people. And he वो एक मतलब इमेजिन करता कि काश कि मैं ऐसा कर पाता. If I could do, if I could take them out of their pain. So that is the poem, A Roadside Stand. We don't have many what we call the poetic devices. We have alliteration, we have personification, we have transferred epithet, and of course we have oxymoron. इसके अंदर जो हमारे वो है आपके oxymoron. जैसे I have told you, greedy good doers. वैसे greedy good जो है वो alliteration भी है, लेकिन greedy good doers जो है it is also what we call as oxymoron, because greedy means selfish, good means अच्छा. So both of them are opposite. The same manner, the beneficent beast of praise, ये भी आपका जो है oxymoron भी है and alliteration भी है, क्योंकि beneficent and beast दोनों में B जो है it is being repeated. The letter B is repeated. On the other hand, it is also oxymoron because beneficent is good, मतलब somebody who is beneficent यानी कि benevolent, and beast means somebody completely opposite. सेल्फिश कार्स, यहाँ पर सेल्फिश कार जो है it has been used for the people who are selfish, those people who are moving in these cars. So it is actually a transferred epithet.
Similarly, here the polished traffic, here it is also transferred epithet. These two are transferred epithet. Oxymoron I have already done. Then greedy, good doers, beneficent, this is all alliteration also. And then the trusting sorrow. And pathetically pled. Personification, because the roadside cannot speak. यहाँ पर the roadside, the two pathetically pled. Pathetically pled is also alliteration, but here the roadside stand, that pathetically pled matlab personification, means the roadside has been personified like a human, कि it is pleading, it is requesting the people to buy something. So it is personification, but pathetically pled is also alliteration. So you have all these. Then or anaphora, the word or has been repeated in the next line in the very beginning. And then you also have many examples of enjambment, means the poem moving to the next line विदाउट एनी फुल स्टॉप और कॉमा. ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर आपका एनजाममेंट भी है. लाइक समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन नॉट हियर हार्डली बियर द थॉट ऑफ इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन. ये आपका जो है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनजाममेंट ऑल्सो. एंड ये वाला जो है it is in the news that all these, ये आपका जो है it is also an example of assonance. Sorry, the vowel I is repeated, but इसमें से जो मेन आपका आता है वो आता है transferred epithet, polished cars and selfish cars. Then इसमें से आपका आता है pathetically pled, that is आपका alliteration also. A roadside pathetically pled, that is personification. Then you have greedy, good doers and beneficent beast of prey, which is both alliteration and also आपका जो है oxymoron. ये आपके मेन है. Then इसमें जो पेपर में 2 मार्कर का क्वेश्चन था उसके अंदर आपके आया हुआ है कि why this word crossly has been put in the parenthesis. That is because that is showing the anger of the poet. That is why it has been put in the parenthesis or bracket. Then what are the meanings of N and S? So N and S is used, it's the abbreviation for north and south. The people who are moving in the cars are complaining that the sign, the symbol for north and south have been put in the wrong manner. तो ये आपको उसमें लिखना है. So these are some of the poetic devices, then the meanings and some of the important questions of this poem, that is A Roadside Stand by Robert Frost.